In the name of Allah, the most merciful and beneficent. Prophet Muhammad ﷺ said, knowledge which does not lead to Allah is ignorance. I am Mr. Fayaz Amahillah from Espatpura. I am working as a teacher at Higher Secondary School Nihama Kulgam. I am also teaching zoology at Sublime Coaching Institute Kulgam. Now, today I will deliver third lecture about 10th reproduction, and that will be budding. Types of asexual reproductions are still continue, and today we will discuss budding and fragmentation. Budding. Budding is another form of asexual reproduction. वैसे वाली budding क्या हो? Formation of new individuals from birth is called budding. Budding. Budding go ये नई इंडिविजुअल बनें बड़ों पे तथ वनो अस budding. ये बड़ क्या छ आसान बड़ बड़स और यूनिसेलुलर और मल्टी सेल्युलर स्ट्रक्चर्स. ये बड़ छ हेकन ऐसित यूनिसेलुलर ती छ आसान मल्टी सेल्युलर ती. अफ बड़स मन छ के टोटिपोटेंट सेल्स आसान यानी तिम सेल यमो पे जनरेट गसन छ नो इंडिविजुअल. बड़स have totipotent cells which give rise to new individual. यानी इससे बड़ छ आसान अब बड़स मन छ आसान totipotent cell. Totipotent cell is a cell yet potentialized to generate new individual, to generate new organism. तहलो totipotent cell इमन बड़न मन छ इमन totipotent cells आसान तमो पे छ नई नई individuals develop गसन. अफ वनो इज budding. तो वही सवाल ये budding कमन मन छ गसन. Budding occurs in ये budding छ गसन ये छ यीस्टन मज गसन ये छ साइकॉनस मज गसन साइकॉन छ पोरिफेरन ये छ हेड्रास मज गसन ये छ ओबिलियास मज गसन ये छ सल्पास मज गसन. गो budding occurs in ये छ यीस्टन मज गसन साइकॉनस मज गसन ये छ हेड्रास मज गसन ये छ ओबिलियास मज गसन ये छ सल्पास मज गसन. तो यमन मन छ गसन budding. वही सवाल यस budding छ अत budding छ ज टाइप्स ऑफ budding. budding छ ज टाइप. अख टाइप गो एक्सटर्नल budding तो ब्या गो इंटरनल budding. External budding and internal budding. Budding is the type. Our external budding, the go internal budding. Now let us take these one by one. Number first, external budding. External budding. External budding. या अफनो ब्याख नाव exogenous budding. अच्छा ब्याख नाव वनन exogenous budding. वही सवाल external budding क्या को? External budding का छ वनन. यथ मा गसन छ काम. In this case, bud develops
on the surface of the body. Yet much body develop bud. The bud but bud grows. Bud grows into young individual. Bud grows into young individual. Body patch bud near, so bud's growth karan, so young individual. When the young individual becomes nutritionally independent on the parent, it separates and form new individual. Yeli young individual banyo, yeli nutritionally independent gasan mai, when you mathat asan parent as kiya, it is separate gasan and forms new individual. This external budding, it is reported in Hedra. It is Hedra's mas Hedra. Hedra belongs to phylum Cnidaria. तो यहाँ पर डायग्राम के जरिए ये जन ये हेड्रा चासन सपोज दिस इज हेड्रा ये हेड्रा आसन अमिस हेड्रा गसन काम अमिस नेरन बड अमिस बड नेरन दिस इज बड द्राय अमिस बड पत गसन बड़स काम जन अमिस बड नेरन ये बड करन ग्रोथ अमिस ये बड करन काम ये ग्रोथ करन It's one of his growing bird. Pache gasan kam amis Shabash, try to understand. You see, growing bird chasan. Ache gasan pat kam tentacles asan. Pachi growing bird karan kam ach banan young individual. Amish panim banan yapar ki tentacles. Ishi young individual banan young individual. Pachi mis beak stage yon. The pachi gasan ye kam you see young individual cho yeli nutritionally independent rosen you miss parent aspect you go parent this is separate gasan yeli separate chu gasan this is banawan no head suppose you manage a head you bani then be a head अगर ये मानो पेरेंट हेड्रा तो या गो योर न्यू हेड्रा
ठीक है गो लिहाजा कर अमिस हेडरास अमिस बड़ नेरान यह सपोज हेडरा अमिस पन टेंटेकल्स अमिस बड़ नेरान एक्सटर्नल बॉडी पे बड़ नेरान तो पे यह बड़ कर ग्रोथ यह गो ग्रोइंग बड़ तो लेटर ऑन ग्रोथ कर यह बनान यंग इंडिविजुअल युथे यंग इंडिविजुअल बनो पे सेपरेट गसान फ्रॉम द पेरेंट ये न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट बनान वन मातहत यमिस कहें यह सेपरेट गसान when it separates and it gives rise to new hedera अगर यह गो parent hedera यह बनो ब्याख hedera go this is also a form of asexual reproduction and it is reported in hedera this is external budding यानी बढ़ रहा है इस बॉडी पेट के ओके अत वो इस ब्याख टाइप अमुक तथ वन internal budding internal budding internal budding as internal budding ch beak now endogenous budding internal budding it is also called as endogenous budding वही सवाल वुश्त च ओमुत इंटरनल बड़स गो बॉडी पे द्रा बड़ सो एक्सटर्नल बड़ तो इंटरनल बड़ो पे नई इंडिविजुअल्स डेवलप गसान इन सम केसेस न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम इंटरनल बड़ो पे नई इंडिविजुअल्स डेवलप गसान अत वनो दिस इज कॉल्ड इंटरनल बडिंग या वनो एंडोजीनियस बडिंग ओके in some cases new individuals develop from internal buds this is called internal budding या वनो endogenous budding यानी अंदर बन बड तो तम पे नो इंडिविजुअल डेवलप वही सवाल यह जन इंटरनल बडिंग यह लबन आम कमन मज पॉरिफेरा मज इट इज रिपोर्टेड इन पॉरिफेरा मज लबन पॉरिफेरा ब्याख नाव वन स्पॉन्जेस तो इन मज लबन आम इंटरनल बडिंग वही सवाल यह इंटरनल बड़न क्या नाव यम पॉरिफेरा इंटरनल बड़न स्पेशल नाव सह गो जिम्यूल्स द इंटरनल बड़स ऑफ स्पॉन्जेस द इंटरनल बड़स ऑफ स्पॉन्जेस are called जिम्यूल्स या गिम्यूल्स पढ़न अड़ या जिम्यूल्स पढ़तो या गिम्यूल्स पढ़तो इंटरनल बड्स ऑफ स्पॉन्जेस आर कॉल्ड जिम्यूल्स शाबाश तो युस जिम्यूल यह जिम्यूल बनन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस जिम्यूल्स are formed during unfavorable conditions. यम साथ कंडीशन अनफेवरेबल अम साथ जिम्यूल बना तो यह जिम्यूल अत जिम्यूलस मज क्या जिम्यूल्स contain a mass of cells called archaeocytes. Jimulin mans mass of cells called archaeocytes. You see jimule at mans cell asan yim zan totipotent cells at mans asan chi reproductive cells at mans asan chi timan chi vanan archaeocytes. Okay.
The gemmules never kin wall asan. Gemmules are surrounded by a spicule wall asan. A never kin wall asan spicule wall. Spicule cha ak skeleton asan iman porphyrin man spicule. Jisan calcium carbonate banyomut. MG wall chiman asan iman gemmulan never kin. Okay. इधर बना हुआ ये जिम्यूल इसी जिम्यूल छ आसान इसी इसके आसान ये जिम्यूल इस कर्ची जिम्यूल आसान आज नेबर की वाल आसान ये वाल नेबर की आज अंदर आसान ये सेल ये मन सेलन चुना आर्कियोसाइट्स आर्कियोसाइट छ नेबर की ये अंदर के सेल आसान आर्कियोसाइट तो यह मन छ आसान आत ये आसान वाल आत नेबर की ये स्पिक्यूलन हंस वाल आसान Spicule wall. This spicule wall is bachaavan during unfavorable condition. You go gemule. Gemule. The gemulus petkin opening asan. That's one a micropyle. Micropyle. You see gemule chasan. Gemulus. Gemulus have opening on upper side. Iman petkin opening asan. That opening shwana micropyle. Micropyle. Micropyle cha opening asan. Icha petkin asan ye micropyle opening. This is the structure of gemule. When you see gemule cha asan, try to understand. You see gemule cha asan. This gemule burns during unfavorable conditions. A gemule cha andra asan mass of cells called archaeocytes, reproductive cells asan, totipotent cells asan. The yas nibir kinch wall asan. It asan bani mo spicule. Spicule skeleton asan. The yas spicule wall is anche. Yeh mis protect karan during unfavorable condition. The ache petkin opening a asan that is called a micropyle. The voice sawal am gemule per kis kuch asan no individual. Kis kuch banan. The three condition favorable gasa. When the favorable condition is returned, favorable conditions return. You see favorable condition even archaeocytes. Archaeocytes come out. Archaeocytes come out through micropyle. Archaeocytes come out through micropyle and give rise to new sponges. Give rise to new sponges. In the condition favorable gasan, you see micropyle chasan, yapur kinchi nearan patyam never. Imchi yapur nearan archaeocytes never. Ilim archaeocytes never dry. Imre archaeocytes. Ilim never nearan. The yummy patch pat bathan nay individuals. Yuma patch banan new individuals. Yuma patch banan new sponges, new individuals. So this is called internal budding. Go you should gemule is internal bud, should body andra banan. Atmas as a mass of cells called archaeocytes, ache neberkin spicule wall asan. So protect current during unfavorable condition. Ache pet opening asan micropyle. When the condition is returned, favorable condition is returned, the use archaeocyte never near an archaeocyte never near an spicule wall hutton archaeocyte never near through micropyle and give rise to new sponges. So this is called endogenous budding या internal budding. Even में दोयम type asexual reproduction is that is budding. B आख type था वो इस बनित. So go trame type, that's one of fragmentation.
Fragmentation. Fragmentation क्या हो? Fragmentation जो एक type asexual reproduction. Fragmentation. It is a type of asexual reproduction. Asexual reproduction in which parent body breaks into small pieces at maturity called fragments. Shall I try to understand? Fragmentation क्या हो? Fragmentation is a type of asexual reproduction. At much as parent body break into small pieces, lakit pieces banana. Magar at maturity, parent body mature gasan. Yeli parent body mature gasan che, acha lakit pieces gasan. Such pieces are called fragments. Voice all ye breaking kain karat. Atkushi breaking karan, atkushim pieces karan. Ye breaking occurs by external or internal forces. Breaking occurs by external or internal forces. Ye breaking kim karat body, acha break karan external ya internal force. Suppose chasan like, chasan wave action, ya wave action, ya death and decay of older parts. Death and decay of older parts. Shabash. Go. Yet parent body break us and locked in pieces at maturity called fragments. Breaking us by external and internal forces like wave action, yeah, death and decay of older parts. Yet much doesn't come. Suppose body has mature gums, yes, poured of mature gums. It could has your sword to papa, patsupane, wisp pevan goes to mature asan gumut. The tensions of Visi pevan, take until mature asan chi body gums. Achi yoda given wave action, wow shivan, wow such janabano gasan come, each janabano body gasan break. Each body gasan break. Number of young death and decay of older parts. Young of older part, that get death. The बाकी parts गए break, तो बने आते fragments. वैसे वाले fragments से करन काम पर, ये fragments growth करन and give rise to new individuals. The fragments grow. The fragments grow and give rise to new individuals. Yam fragments yam growth karan, to yam chbana new individuals. Okay, so this is called a fragmentation. Once all a fragmentation one mashigasa, it occurs in Ishigasan peripheral mashigasa fragmentation. Ishi nidarian mashigasa fragmentation. Ishi flat worman mashigasa fragmentation. Ichigasan sitar fission mas fragmentation. Among palatas tishigasan algae mas chigasan fragmentation. Like Sopyro gaira isn't. Your Sopyro gaira chi. Your shell asan nagan ni Sopyro gaira. Tachigasan fragmentation. Ithai kurcho Pangean jigasan fragmentation. Pangea manch rhizopus. Rhizopus chigasan fragmentation. इथे कणचो ब्रायोफाइट्स या मॉसेस वनवस तिमन मंच गसन फ्रेगमेंटेशन लाइक रिक्शा शाख ऑर्गेनिज्म प्लांट ऑफ एमिस्टिगसन एंड फर्नस टेरिडोफाइटो मंच सलेजिनीला इस मंच गसन फ्रेगमेंटेशन. Shabash. Fragmentation occurs in peripheral mans gasan.
बिच नाइडेरिया मज गसन फ्लैट वर्मन मज गसन स्टार फिशन मज गसन एल्गियन मज गसन स्पैरोगैरास मज फंजियन मज गसन राइजोपसस मज मॉइसन मज गसन रिक्शास मज तो फर्नजन मज गसन यानी कि टेरिडोफाइटा तिमन मज गसन स्लेजनीलास मज फ्रेगमेंटेशन स्लेजनीला तो यम सारी हावन फ्रेगमेंटेशन. So this was my third lecture in class 10th biology, and the unit is reproduction, and this types of asexual reproduction will still continue. Now in the next lecture we will discuss these other forms of reproduction like sporulation and regeneration. Sporulation and regeneration we will discuss in the fourth lecture. Okay, thank you.